Hi everyone, Ashish Kyal here and this is a very quick short video. मैंने सोचा निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, so why not to come live and show what happened and what was the tweet, what we were expecting, वो सारी चीजों के बारे में. But before I move on, if you're liking this kind of short videos and if you are enjoying the morning tweets, then do put across your comments down there. आज का मॉर्निंग में ट्वीट किया था दैट निफ्टी नीड्स टू गिव अ 15 मिनट क्लोज अबाउट 26,140 मार्क and then we can expect an upward move towards 26,250, 260 levels and an upward move towards lifetime high levels should happen. Nifty made a high on the upside but reversed sharply back on the downside from that 26,140 का जो लेवल दिया था वर्कड अमेजिंग लेवल. 15 मिनट क्लोज नहीं किया उसने हाई बनाया 26,142 का, वहीं से रिवर्स हुआ एंड मूव्ड ऑन द डाउन साइड. द सपोर्ट जोन वाज 25,980 के आसपास का जो जोन था. इट ब्रीच्ड इवन दैट एंड देयर वाज अ सेलिंग प्रेशर इन द फाइनल आवर ऑफ द ट्रेडिंग. Now which means the close has also happened. जो क्लोज किया मार्केट ने वो भी प्रायर डे लो के नीचे किया, तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर तो है. And this started with the Amavasya cycle, the lunar cycle, and it started from there and we saw it continued for 2 to 3 days now. Now what to do here? From here, I was expecting कि final hour में एक time cycle kick off होना चाहिए and we should go up. नहीं हुआ, price action ने confirm किया ही नहीं. Let me very quickly share across the chart which I am looking at right now and show it to you. We haven't closed a positive hourly candle. Now that's the problem. यहाँ पर हमने देखा जो मूवमेंट आया था 9:15 को was decent acceptance back here 140 के जस्ट उधर ब्रीच करना था, नहीं किया एंड वी रिवर्स्ड बैक ऑन द डाउन साइड. दिस इज ऑन द आवरली चार्ट इफ यू आर सीइंग हियर. एंड यहां से ब्रीच कर दिया हमने ये चैनल सपोर्ट without a single attempt on closing above prior hour high. This was the final hour selling that we saw, and that happened as soon as the support zone near 26,030, 25,980 ये zone पूरा break हुआ, we went down. From wave perspective, this looks to be an X wave down. I think this is going to be an X wave right now, ongoing, which is there. And post its completion, we should start seeing an upward move. But one has to be now careful, cautious. क्यों? क्योंकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देख रहा हूं तो प्राइसेस ने प्रायर डे लो के नीचे बंद किया है. डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से टर्न हो गया. पॉसिबल यह है कि यहां से हम रेंज में रहेंगे. आई थिंक वी माइट बी इन अ रेंज with an immediate support of 25,850 and a very important support of 25,730. That's the support prior areas, wave B, and this was the area where we can expect the support to be there. Up move के लिए I need a move about 26,140. उसके ऊपर चाहिए मुझे, भले ही लेट है मार्केट को, लेकिन उसके ऊपर निकालना इंपॉर्टेंट है. Then we can say there is some kind of stability. What is शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, थोड़ा कंसर्निंग हो रहा है कि ये जो साइकिल है, द डेली टाइम फ्रेम साइकिल इज नाउ किकिंग इन फॉर अ सेल साइड. तो कोई भी साइकिल फर्स्ट हाफ में बाय में होता है एंड देन द लेटर पार्ट ऑफ इट कैन शो सम काइंड ऑफ अ सेल साइड प्रेशर. आई एम नॉट टर्निंग बेरिश स्ट्रांगली. व्हाट आई एम सेइंग इज पॉसिबल है हम कंसोलिडेट करेंगे and we will enter the cycle zone with the middle cycle at 12 December and then start seeing the momentum which is right now missing from the market eventually. Overall perspective, this is the mother of bull market. It is still intact. I'm not second guessing it. The weekly still remains very strong. मैं अभी मेरी मंथली रिसर्च पब्लिश कर रहा था, ओवरऑल टारगेट्स डिफाइन कर रहा था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैं वो लिख ही रहा था. ये सारी चीजें मैंने उसमें इनकॉर्पोरेट की है. व्हाई द मंथली इज गुड, how we should head, and from how we should go from here on. So this is the bull market. In this, we are seeing a short-term correction. Now, to give you some kind of a socioeconomic perspective of this market, always कोई भी मार्केट को अगर ऊपर जाना है, the first thing that you have to remember is the spending capacity of the end user, which is us or our generation or the next generation. If you go to, from a socioeconomic perspective, if you go to a restaurant, you will start seeing the Gen Z, the next generation, being there before you.
Whether you go to malls, whether you go to lifestyle shops, you go there and they do not hesitate in spending. They just have to swipe a card and they do it without thinking. Is that good? Yes. For the economy to grow, velocity of money should increase. And that's a sign. I think Gen Z will be the generation who is going to take India to the next level higher. We as a generation were more balanced approach from savings, investment, and spending. Now the Gen Z generation is coming into big time spending. Now that's going to help the profitability of companies to grow, money to rotate, and that's going to be very important for economy to grow. We are seeing that classic rotation. Also, Stowell's pyramid, a classic rotation. I presented all of those things in my monthly research. If you want to see that, a part of that research, do put down the comment. तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन की मेरी मंथली रिसर्च में, जिसका नाम है आकाश। और ये सारी चीजें मैं उधर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो पब्लिश होगी। सो आई कैंट रिवील इट दैट राइट नाउ, बट आई थिंक वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट एरा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन इंडियन मार्केट। शॉर्ट टर्म यस ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्रॉम ट्रेडर्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार व्यू यहां पर अभी बेरिश हो रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट 1 year, 1.5 year, you cannot miss the move. The socioeconomic studies are showing it's a long term bull trend. We are just starting to break out and it's going to be there. तो ये था लॉन्ग टर्म। मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं मंथली लिख ही रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है मैंने, तो आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं। और साथ ही में इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही एक इंडिकेटर जो बहुत जबरदस्त चल रहा है यार। आज सुबह मुझे लगा था वो इंडिकेटर बाय साइड पे टर्न हो जाएगा, लेकिन वो बाय साइड पे टर्न अभी भी नहीं हुआ। दैट इंडिकेटर आई एम टॉकिंग अबाउट इज एन ए के इंडिकेटर, which I'm going to just share across my screen very quickly and show it to you in quickly over here. ये रहा वो chart. This indicator turned on the sell side at the level here, which you can see, and from there not a single time all the three lines have turned back on the upside. सुबह मुझे था कि when it was about to close, give a 15-minute close about 25 26 140 के ऊपर नहीं किया उसने, it was there, just reverse there. That was the cautious sign कि भाई गड़बड़ है वापस से, and we can see what happened. See this, the entire fluctuation, not a single buy. All the three lines never came towards the zero line. That shows a buy on this indicator. That's a classic sign. This is an AK indicator. If you want to know more about it, put out in the chat or comment. So in a nutshell, कल करना क्या है दोस्तों? फिलहाल कॉशियस हो जाना है, मार्केट को 26,140 के ऊपर जाने दो, सस्टेन करना है। दूर है मुझे पता है, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। अभी नीचे देखेंगे सपोर्ट 25,850 पे क्या बिहेवियर हो रहा है। अगर वहां से रिवर्सल मिल रहा है तो शायद छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग मोड ऑन हो रहा है वापस से, बिकॉज वी नीड टू स्कैल्प नाउ। पोजिशनल ट्रेड से थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, स्कैल्प करिए। नेक्स्ट 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, क्या हम 12 दिसंबर तक कंसोलिडेट करेंगे या यहीं से वापस ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट करेंगे। 1-2 दिन मुझे चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ये सारी चीजों को पता करना तो नीचे कमेंट में डालिए, रीट्वीट करिए, मुझे पता चलेगा ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। जाते जाते बिफोर आई मूव ऑन, whatever I am telling here is purely from learning educational perspective. I am not recommending anything to buy or sell. We are SEBI registered research analyst. Investment in market is risky and there is no guarantee. Ensure you maintain stop loss and understand the risk. Thank you very much.